Namaste. My name is Namoishi, and I'm from Kathua, Jammu and Kashmir. And I recently qualified UGC net exam in English, and I scored 99.248 percentile, missing JRF by a very tiny margin. So I thought of making this video to discuss a bit about the process and the entire journey, which is culminated in this result, and of course the contribution and the credit which AKS Rajveer sir takes and the entire literature lovers community takes. So to tell you a bit about myself, I did my schooling from Kathua. JK Bose से ही मैंने अपना स्कूल फिनिश किया और उसके बाद आई मूव्ड टू दिल्ली. मैंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है. आई एम अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट. और उसके बाद जब कोविड हुआ एंड फॉर दैट रीज़न आई कुड नॉट कंटिन्यू इन दिल्ली. So I thought of taking admission in Jammu itself and also returning to my passion because I have always loved books. I've had a very keen interest in reading and I also write a bit. So I took admission in Central University of Jammu and I undertook my MA English course. और उसी दौरान मुझे सेट और नेट के बारे में पता चला बिकॉज उसके पहले मुझे आई वॉज नॉट क्लियर कि मुझे किस लाइन में जाना चाहिए because that is a very exploratory phase. You are seeing and hearing a lot of things, so it gets very tough to understand and decide what you want for yourself and not what someone else wants for you. So my masters has recently finished. जून में ही मेरे फाइनल एग्ज़ाम हुए हैं और जुलाई में मेरा जेके सेट का एग्ज़ाम था. सो आई हैड बेसिकली जस्ट वन प्रॉपर मंथ ऑफ प्रिपरेशन फॉर माई सेट एग्ज़ाम बिकॉज उसके पहले एक तो इतना इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस हैड बिकम वेरी लेथार्जिक. और उसके बाद जब मुझे सेट के बारे में पता चला और फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई, सो आई हैड टू ट्रैवल एवरी डे. तो उस वजह से मेरी प्रिपरेशन इतनी बढ़िया नहीं हो पाई, ना कोई प्रॉपर प्लान था ना कुछ था. सो इन दैट वन मंथ बिटवीन माई मास्टर्स फाइनल एग्जाम्स एंड सेट वॉज द ओनली प्रिपरेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन विच आई हैड. और उस दौरान आई, बिकॉज मैंने पहले पास्ट में भी अन अकेडमी यूज़ किया है, तो आई थॉट ऑफ गूगलिंग, थोड़ा रिसर्च करती हूँ कि हु इज़ द बेस्ट educator, top educators in UGC Net English, and of course AKS Rajveer sir का his name popped up, and I thought okay I'll check it out. तो मैंने paid course लिया for a month और उस एक महीने में जो सेट में जो भी मेरे आंसर्स सही हुए या मुझे थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी वो उनके उस कोर्स की वजह से थी जो मैंने अन अकेडमी पे उनका पढ़ा था. और फिर वहाँ से मुझे पता चला कि ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल एज वेल, लिटरेचर लवर्स एज वी नो. तो आई थॉट कि ओके आई शुड एक्सप्लोर द चैनल ऑल्सो. और वहाँ पे there's a whole gamut of knowledge. There's so many playlists. और उस समय बिकॉज सेट का एग्ज़ाम सिर पे था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना डीप जाके पढ़ाई कर सकूँ. तो जितना मुझसे हो पाया उस समय नोट्स का, आई हैड वेरी स्मॉल नोटबुक ऑफ नोट्स उस टाइम पे, बस उतना ही करके उतनी सी प्रिपरेशन के साथ मैं सेट में गई थी. और अभी तक सेट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ आई थिंक, तो मुझे पता नहीं है कि हाउ इट हैज़ फेयर्ड. बट वो जो सेट का एक्सपीरियंस था इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एक्चुअली इन लिटरेचर के फील्ड में कैसे होते हैं. बिकॉज मेरे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन था कि लिटरेचर का है, इंग्लिश का है. आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑन द लाइन्स ऑफ लिटरेचर. तो ग्रामर पे फोकस होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे स्कूल में क्वेश्चंस होते हैं. बट दैट सेट एक्सपीरियंस इट चेंज्ड माई ओवरव्यू, माई पर्सपेक्टिव अबाउट लिटरेचर. एंड आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू डू मोर एंड आई नीड टू amp it up because this was not enough. Obviously you have to learn about all kinds of literature, you have to understand the different theories and the different critics, उनके व्यू क्या थे, इंग्लिश हिस्ट्री कैसे निकली है, ब्रिटिश हिस्ट्री कैसी है, अमेरिकन हिस्ट्री कैसी है, फ्रेंच हिस्ट्री, बेसिकली एंटायर इंग्लिश लिटरेचर, डजेंट मैटर फ्रॉम विच कंट्री. तो वो जो एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी टू गेट लेसन कि मुझे और अच्छा करना है.
So after that, uh, I could have chosen, obviously, I could have chosen any channel I could want, because everything is available. But I stuck with literature lovers because of the attention to detail and his way of talking to students and dealing with us. He's very soft spoken. I've never seen him get angry at any student for any kind of question, and even if he ever gets upset, वो काफी मजाक मजाक में उस बात को निकाल देते हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि वो कोई सिर पे डंडा लेके खड़े हैं कि आपको ये करना है वो करना है. ही इज ऑलवेज बिन वेरी, ही इज ऑलवेज, so obviously this thing, his way of dealing with the students. And the second thing, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, द अटेंशन टू डिटेल, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे उनसे पता चले जो मुझे कहीं किसी मॉक टेस्ट में या कहीं किसी किताब में नहीं मिले. लाइक किसी ऑथर का सूडोनेम, किसी लेसर नोन ऑथर का कोई वर्क, या किसने क्या लिखा, क्यों लिखा, और उनका कौन दोस्त था जिसने उस वर्क के बारे में क्या इंस्पायर किया. तो ये जो सब चीज़ें हैं ये मुझे इनके चैनल पे पता चली. सो दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस चैनल फॉर मी. सो बट आई एम but I won't tell you to stick to one channel, because even I did not only stuck to literature lovers. I was here for most of the part, but I obviously explored everything because ultimately you are doing it for yourself. सो आपको जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है, आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, आपको लेना चाहिए. सो सेकेंड थिंग वॉज, सो ऑल ऑफ दिस मेड मी डिसाइड कि दिस इज़ द गुड चैनल, और मुझे अपना जो मैक्सिमम जो नोट्स है वो यहीं से बनाने चाहिए. So now to talk about the process which I implemented for myself. So मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं कोई इतनी बड़ी, कोई मैं महान हस्ती नहीं हूँ, and I don't think I have that right yet to lecture someone about how they should prepare and कहाँ से उनको पढ़ना चाहिए और कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए. I don't think that I have reached that point in life yet. But I am here to talk about myself, so I will just share that experience, ki what worked for me. So it might work for you, it might not work for you. Ultimately you have to decide for yourself. So in the past, it's not like ki this result has come after a series of successes for me. No, I've had to struggle a lot uh, in my own capacity, because this was not my first exam in these 3 years from my graduation till masters. इसके बीच में बहुत एग्जाम्स थे. I appeared for bank exams, I appeared for my CAT exam as well. And bank exams में there was always like कि एक दो marks से ही रह रहे, so that was a very big disappointment for me. And my CAT exam, it went well, I got a good score, but somehow it also didn't work out, so that was also very big heartbreak for me. So I went into this exam with zero expectations. In fact, I was going with negative expectations, because when you have faced that kind of failure, आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि शायद आप में कोई कमी है और आप इतने अच्छे नहीं हो, और शायद आपकी मेहनत में कुछ कमी रह रही है, या फिर ये बेकार जा रही है, क्योंकि हीन भावना आ ही जाती है जो भी आप कर लो. तो this was the first obstacle for me, and I thank my mother for it, because she always used to say कि you are very young, you have your whole life in front of you, and you have a lot of chances. So ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, you just focus on yourself. Because as I told you, I had to leave Delhi, so I used to see all my friends there कि वो लोग enjoy कर रहे हैं और उनकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं बस एक चार दीवारी में कैद होके रह गई हूँ, बस एक लैपटॉप खोल लेती हूँ सामने और किताबें. सो वो जो फीलिंग थी, सबसे पहले आई हैड टू टैकल दैट, और उसको करना वॉज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. एंड उसके लिए आपको एवरीडे आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये दे आर नॉट जस्ट अबाउट योर मेंटल कैपेसिटी, ये आपको फिजिकली इमोशनली भी चैलेंज करते हैं. एंड आई हैड टू गिव अप lot of things, social life, but not social media. I was very active on social media. So my point is कि before starting preparations आपको mentally ready रहना चाहिए कि
मैं यहाँ पे बस अपना हार्ड वर्क करने आई हूँ. सो इवन गीता का भी श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते जाओ, आप अपने फल की चिंता मत करो. सो ये जो थियरी थी, इसको प्रैक्टिस में लाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज आफ्टर सेट एग्ज़ाम आई थिंक 2-3 महीने का ही समय था बिटवीन सेट एंड माई यूजीसी नेट. और उसी दौरान जितनी भी मेरी तैयारी हुई है वो सब उसी दौरान हुई थी, और उसमें से हर महीने 15 दिन तो मुझे पॉजिटिव अपने आप को रखने में निकल जाते थे कि नो, करना है, जैसे मर्जी करना है. और अपने आप को ये बोलना कि रिजल्ट का मत सोचो, इट इज़ अ वेरी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. सो माई टिप फॉर यू, फर्स्ट टिप फॉर यू इज़ दैट कि डोंट थिंक कि क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. You should only focus on doing your best in your preparations, and you should just surrender yourself to God, because God is the only savior in my case. So this was the first thing which worked for me, positive mindset. And second was of course YouTube and music. मैंने पूरी जर्नी में ऐसा नहीं किया कि 15-16 घंटे पढ़ी और टीवी नहीं देखा या नेटफ्लिक्स नहीं चलाया या कुछ ऑनलाइन नहीं देखा. इज़ वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया. आई लव वॉचिंग मूवीज एंड सीरीज, और वो भी मेरा चल रहा था. बट यू हैव टू नो कि आप जितना भी ड्यूरेशन में पढ़ो, यू डोंट हैव टू नेसेसरीली सिट फॉर 15 आवर्स, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. सो आप जितना देर भी बैठ रहे हो, अगर आप 1 घंटा भी बैठ रहे हो, सो यू जस्ट मेक श्योर कि 1 घंटे में आप 1 सेकेंड भी इधर उधर नहीं देखो. एंड दैट इज व्हाट आई डिड. माई डेली टारगेट वॉज 5 to 6 hours ऑफ प्रिपरेशन. और दैट आई एम्प्लॉयड पोमोडोरो मेथड. इट इज़ बेसिकली कि आप अपने काम को 25 मिनट्स के ब्लॉक में डिवाइड करते हो. यू वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर 25 मिनट्स, एंड फॉर 5 minutes you take a break. So that is what I did. I actually increased my block to 50 minutes, और मेरा टाइमर ऑन रहता था, and I used to do like 7-8 cycles of that pomodoro. So that is what worked for me. Second thing, because that actually pushes you to just focus on what you are doing. So that is very helpful, and I would advise you to start implementing pomodoro in your life, because it is a blessing, I would say. It has worked for everyone who has tried it. दूसरी बात ये कि पोमोडोरो के साथ there was a combination of music, not just music, not just lo-fi or study music. I was listening to all sorts of things: Bollywood, South Indian, Korean, English, instrumental, classic, everything. Like जिस mood में जिस दिन जो music work करा वो. And obviously I cannot fail to mention the different Vedic chants and stotrams which I used to hear to keep myself calm, because I get anxious very quickly. So first thing is being positive. Second is music and YouTube and Pomodoro. Third is daily revision. So my secret, you could say, I don't think it's a secret, but the only one thing which I did, which I'm proud of, which was very taxing on me, was to go through every MCQ I could lay my hands on. I went through so many YouTube videos. Even on Literature Lovers channel, there are so many videos about Wordsworth ke 200 questions, Shakespeare ke old papers ke sabhi 700 questions. I went through every single of them, every single one video of them. I jotted down all of the MCQs, and my target was to go through 1000 to 1500 MCQs daily and to revise them. So until I finished that, I wouldn't move to the next topic. Like, ऐसा सुनने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, आपसे नहीं होता. But when you start doing it, 1 or 1.5 hour is the max it takes. But you have to be constant about it. That is how you retain it in you. And of course, I cannot, I cannot miss to tell you how important mocks are, how important practice questions are. So every day, like, even if you do like 2-3 minutes of your mocks, like there are very short mocks available on net, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. ऐसा मत करो कि आज पढ़ा, कल रिवाइज नहीं किया, देखेंगे बाद में. डोंट डू दैट, दैट्स वेरी टॉक्सिक.
And so these were the things. And of course, I you of course ये मेरे साथ भी मेरा भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज पेपर वन वाज द फैक्टर विच टुक जेआरएफ फ्रॉम मी. मेरे पेपर टू में 99.5 परसेंटाइल था और पेपर वन में 97.2 समथिंग परसेंटाइल था. So that is the greatest lesson I have taken from this, that don't take paper one from for granted. I did not take it for granted, but I did not put as much effort I put in paper two in paper one. So for paper one also, I was on YouTube. There's another educator. I am failing to recall his name, but he's also a teacher at an academy, and I think his name is Talveer Singh. I'm not sure about the name, but you can obviously search. So he he helped me. He's the savior in paper one. Like whatever I could score is because of his lessons, because they were very helpful, extremely helpful. So don't ignore paper one. Be consistent in your revisions. Be consistent in your efforts. Be positive. Don't think कि you cannot do it. If you go with that mindset कि मेरा result क्या होगा, you will never be able to do it properly. So keep your eye on the goal, only the goal, not the result. Your goal is to clear it, right? So keep your eye on it कि मैं उस जगह तक कैसे पहुंच सकता हूँ या कैसे पहुंच सकती हूँ. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? बाय ओनली फोकसिंग ऑन योर प्रिपरेशन. अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता क्लियर करने से. बट अगर आपने प्रिपरेशन के दौरान में ये सब सोचा होगा कि मेरा क्या होगा, नहीं होगा, उसका हो गया, फलाने का हो गया, तो फिर भूल जाओ. बिकॉज दूसरों का देखते रहोगे तो अपना नहीं चढ़े, अपना छूट जाएगा. एंड रिमेंबर कि हर इंसान की अपनी जर्नी है. ये टॉक्सिक साइकिल मेरे साथ भी बहुत है कि उसका इतना अच्छा जॉब लग गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, सबके मज़े हो रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. डोंट गेट इन टू दैट. दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ. और उससे निकलने में आपका बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट होगा, जो कि आप बेटर यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में. सो बी पॉजिटिव, ओनली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ऑन द एंड गोल. बी लाइक अर्जुन, बस मछली की आंख पे. किसी को मत देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है. बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स. रोज रिवीजन करो, रोज देखो कल क्या पढ़ा, एक्टिव रिकॉल टेक्निक को यूज करो. और अपने आप को बांधो मत. लिसन टू सॉन्ग्स, वॉच स्टफ, reward yourself for every small achievement, and of course you will clear it, and I'm sure. And that is all I wanted to say. And I would just show you the only two books which I used. So this is the Pearson ka book, the latest edition I could find for paper one. And for paper two, the book I consulted was this, Arihant ki. This was also the latest edition. So that is all. Thank you for listening, and thank you for giving me this platform. And thank you, A.K.S. Rajveer sir. uh, a lot of credit goes to you, and the most credit goes to God, and then to my mother, and then of course to me. I take all the credit also, because I did a lot of hard work in the less time I had, and whatever I could manage, I did that. And of course, a few special friends who have always been there, motivating me, telling me to be better. And most of the techniques which I discussed were actually their idea. So I hope you clear your exam, and I wish you all the best. And hopefully, I see you with another such video when I clear my JRF in next attempt. So, thank you.